Hi dear students, this is part 4 of chapter number 2, and in this video we will going to study about the Bohr's model of atom. Alright, so be ready with your pen and notebook so that we can proceed further. So previously we have seen dual behavior of electromagnetic radiation. Okay, so in electromagnetic radiation we studied that scientists said that light act as a wave, है ना? और फिर उसके बाद हमने dual nature भी पढ़ा. And then we studied about black body radiation and photoelectric effect को जब हमने पढ़ा, then we studied about Planck quantum theory, है ना? And then we फिर उसके बाद scientists said that light behave as a particle. So light possess both wave nature also as well as particle nature also. जैसे two faces of the same coin. All right. Because in some experiments we see wave nature and in some experiments we see particle like nature. Okay. So here you can see I have written 2 points which says particle nature is visible when radiation interacts with matter and wave nature is exhibited when it propagates. Okay, now let us see this diagram. We can clearly see the particle nature as well as the wave like nature of the light. Okay, और जैसे ही यहाँ पर बैरियर आया तो दोनों का कैरेक्टर समझ में आ गया है ना, पार्टिकल भी हमें समझ में आ गया एज वेल एज वेव नेचर भी समझ में आ गया. इज दैट क्लियर? It is not like this that sometimes light behave as a wave and sometimes it behaves as a particle. Both exist together, okay? दोनों एक साथ exist करते हैं. But some experiments exhibits wave nature while some show particle nature of light, okay? So light possess both, ठीक है? So particle nature is seen when radiation interrupts with matter, and when radiation is propagated, then its wave nature is seen. Is that clear? Okay. Now before we proceed to Bohr's model for atom, let us first see the Rutherford's model of atom. Okay. So Rutherford ने क्या बोला था? He said that the positive charge and most of the mass of the atom is present in a very small region which is known as nucleus. Okay. And secondly, he said that the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. Like a sun is present at the center, है ना? एंड जैसे सोलर सिस्टम में होता है प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर पाथ, सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज ऑर्बिट, लाइक इन अ सोलर सिस्टम. ओके, तो जैसे सोलर सिस्टम में सन है वैसे ही एक एटम में न्यूक्लियस होता है. Planets revolve around the sun. So here in the model of atom, electrons revolve around the sun. And thirdly, he said that electrons और nucleus के बीच में जो force है, that is electrostatic force of attraction. So he did not specify that at what distance atoms are revolving around the nucleus. ठीक है? And what is the radius of the orbiting? And what is the velocity and energy of electron orbiting? So no information was presented regarding all these. And then Niels Bohr's effort came in. Okay. Now if we talk about the drawback of Rutherford model, अब यहाँ पर आप देख रहे हो. So here you can see one electron is there. So when it starts moving in an atom, तो जैसे ही orbit में move करना start किया, what will happen? Ultimately it will collapse in the nucleus. Okay, so when charged particle accelerates, हम ऐसे ही बोलते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब ये एक्सेलरेट करता है इट लूजेस एनर्जी. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विल इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अपनी एनर्जी को लूज करेगा और फिर फाइनली जाकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि ऐसा होता नहीं है. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर में. सो इलेक्ट्रॉन इन स्पाइरल पाथ
throughout when it is moving it is releasing energy. ठीक है, रेडियस चेंज हो रहा है, एनर्जी इज ऑल्सो कंटिन्यूसली चेंजिंग. ठीक है, सो यहाँ पर Neil Bohr understood that something is wrong here. Okay, and then he proposed his model of atom. So in 1913, the Danish physicist Neil H.T. Bohr proposed a model of the hydrogen atom that combined with the work of Planck, Einstein, and Rutherford, and was remarkably successful in predicting the observed spectrum for hydrogen. Okay, अभी continuous spectrum and line spectrum आएगा, that we will going to study after Bohr's model of atom, क्योंकि वो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Okay, so Bohr's theory was for single atom. He utilized all the theories given by these scientists, and then he proposed his model, and then he gave the postulates for Bohr's model of atom. So let us see these postulates one by one. So first postulate is electrons revolve around the nucleus in specific permitted circular orbits called stationary states or allowed energy states. So Bohr also said the same thing, that electrons are revolving in circular orbits only. ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने बोला था. And secondly, the energy of an electron in an orbit does not change with time. ठीक है, these orbits are known as stationary energy levels. Stationary मतलब fixed. ठीक है, so whenever electron go from lower level to higher energy level, it will absorb energy or it will radiate energy if it will go from higher energy level to lower energy level. Okay, like suppose this is the first orbit और इसका energy level है E1, and then another orbit is present whose energy level is E2. अगर एक इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो वो E2 में जाने के लिए एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा. इज दैट क्लियर? सपोज E1 और E2 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 5. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर E1 का जो एनर्जी है वो 5 है और E2 का 10 है, तो दैट मीन्स E1 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको 5 और एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, तभी वो E2 में जा सकता है. ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर वो E1 में है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी वही रहती है, चेंज नहीं होती है. E1 में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 ही रहेगी, वही रहेगी जो E1 एनर्जी शेल की है, वो चेंज नहीं होगी. वो चेंज कब होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा. इज दैट क्लियर? So energy remains same in the orbit. It does not change with the time. All right. Third postulate is an electron can move from one energy level to another energy level by absorbing or emitting required amount of energy. ये हमने quantum theory में भी पढ़ा है. Okay. So the difference between the two stationary states that differ in energy is given by, we know that h nu is equals to energy, and if we are taking the difference in energy then E2 minus E1 will be there. ठीक है, तो h nu will be equal to delta E and nu will be equal to delta E upon h. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E2 minus E1 upon h, where E1 and E2 are the energies of the lower and higher allowed energy states respectively. Okay, and this expression is commonly known as Bohr's frequency rule. Understood? Now the fourth postulate is the angular momentum of an object is always quantized. Quantization हमने पहले पढ़ा है. And only those orbits are possible whose angular momentum, ठीक है, इससे पहले हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें. लीनियर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? m/v. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेयर n इज इंटीजर 1 2 3. ठीक है, सपोज n अगर 1 है तो mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई हो जाएगा. अगर n की वैल्यू 2 है तो mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन पाई हो जाएगा. ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम हैज स्पेसिफाइड वैल्यूज. ठीक है, वेलोसिटी रेडियस की भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है. ऑल राइट.
एंड एच इट इज प्लैंक कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स. ओके, so thus an electron can only move in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. So that is why only certain fixed permitted orbits are allowed. ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था permitted orbits. तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही मूव कर सकता है. And the reason we have studied. Is that clear? So these were the postulates for Bohr's model for hydrogen atom. Now let us see the energies of stationary states. The details regarding the derivation of energies of the stationary states used by Bohr are quite complicated and they will be discussed in higher classes. So let us see according to Bohr's theory for hydrogen atom. First point is the stationary state for electron are numbered n is equals to 1, 2, 3. These integral numbers are known as principal quantum numbers. Is that clear? So what are stationary states? Orbits only, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो n की वैल्यू क्या होगी 1. अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2. सो दीज integral number n is equals to 1, 2, 3, 4. These are known as principal quantum numbers. Okay. Second is the radii. Radii क्या होता है? Plural of radius. So जो stationary states का जो radius होता है तो उनको हम कैसे calculate करते हैं? It is expressed as Rn is equals to n square a naught. Rn क्या है? n is the number of shell. ठीक है, ये principal quantum number. तो a naught क्या है? A naught is the value of A naught is 52.9 picometer. ठीक है, so thus the radius of the first stationary state called the Bohr radius is 52.9 picometer. Normally the electron in the hydrogen atom is found in this orbit only. N is equals to 1. तो n अगर 1 है तो r की वैल्यू a नॉट की इक्वल हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर. इज दैट क्लियर? सो n जैसे जैसे इंक्रीज करेगा r की भी वैल्यू वैसे ही इंक्रीज करेगी. सो इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, एंड ये जो फॉर्मूला आया है this we have got after the derivation, and derivation is not included in your syllabus. You will study in higher classes, so please learn this formula as it is. Okay, so the third point is the most important property associated with the electron is the energy of its stationary state. उस stationary state की जो energy होती है उसको हम कैसे calculate करते हैं? ठीक है, it is given by the expression En is equals to n क्या है 1, 2, 3. ठीक है, इंटीग्रल नंबर. सो En is equals to minus RH 1 upon n square. And RH is known as the Rydberg constant and its value is 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. ठीक है, so the energy of the lowest state also called as the ground state is E1. अगर n1 है तो E1 होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 इज इक्वल्स टू माइनस आर एच की वैल्यू पुट करेंगे और 1 अपॉन एन स्क्वायर. n1 है तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 आएगा. तो E1 कितनी आ जाएगी? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. So the energy of the stationary state for n is equals to 2 की क्या हो जाएगी? E2 is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 1 upon 2 square. तो उसको हम calculate करेंगे. Answer will be minus 0.545 into 10 to the power minus 18 joules. Okay, so this is how we calculate the energy of the stationary states by the formula En is equals to minus RH 1 upon n square, where n is equals to 1, 2, 3. So remember this point. Okay. Fourth point is Bohr's theory can also be applied to the ions containing only one electron, similar to that present in the hydrogen atom, like for example helium ion, lithium ion, beryllium ion, and so on. The energies of the stationary states associated with these kinds of ions, also known as hydrogen-like species, are given by the expression
En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square upon n square joules. ठीक है, z क्या होता है, एटॉमिक नंबर. ठीक है, एंड रेडियाई बाय द एक्सप्रेशन Rn is equals to 52.9 n square upon z. ठीक है, n आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ शेल. ठीक है, where Z is the atomic number and has values 2 for helium. हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3 होता है. ओके, so from the above equation it is evident, it is clear that the value of energy becomes more negative and that of radius becomes smaller with the increase of atomic number. So जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही रेडियस कम होगा और एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी. Is that clear? So this means that electron will be tightly bound to the nucleus. Okay, that means the energy of an orbit closest to the nucleus is lowest, whereas energy of orbit far away from the nucleus is highest. ठीक है, last point is the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus and decrease with increase of principal quantum number. मतलब जो velocity है एक इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज होगी अगर रेडियस डिक्रीज होगा एटम का. रेडियस डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी डिक्रीज होगा और उसके साथ ही न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी एक इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी और वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा. दैट मीन्स रेडियस ऑफ द एटम विल इंक्रीज. ठीक है, so this was all for today. I hope you have understood the video. Please go through it sincerely. Okay, so this is all for today. Thank you and all the best and study well.